delegates, paper presenters, researchers, and Shobhitians. A very warm welcome to the valedictory ceremony of the first International Conference on Science of Rudraksha 2023. Before proceeding further, I request Professor Janan, respected Registrar, respected Vice Chancellor, Shobhit University Meerut, to please welcome Professor Sunil Rai, sir. I request Professor P.K. Goyal, sir, to please welcome Professor Janan, Honorable Vice Chancellor, Shobhit University Meerut. I request Professor P.K. Goyal to please welcome Professor Janan, Honorable Vice Chancellor, Shobhit University Meerut. I request Professor V.K. Tyagi, sir, Dean, School of Engineering and Technology, to please come forward and welcome Professor Ranjit Singh, Vice Chancellor, Shobhit University, Gangu. I request Professor V.K. Tyagi, sir, to please come forward and welcome Professor Ranjit Singh, sir, Honorable Vice Chancellor, Shobhit University, Gangu. Thank you, everyone. As we draw the curtains on this enlightening conference dedicated to the sacred Rudraksha, I'm honored to stand before you as we reflect upon the profound journey we have over the 2 days. The Rudraksha is a divine gift from nature and has been long revered for its mystical powers, spiritual significance, and healing properties. This conference has not only been a platform for the exchange of knowledge, but also a celebration of the rich heritage and wisdom that the Rudraksh symbolizes. Now we are at the valedictory, for which Professor Sunil Rai, sir, Chancellor, University of Petroleum and Energy Studies, have joined us. Before proceeding further, I request Professor Janan, respected Vice Chancellor, Shobhit University Meerut, to please come forward and present welcome and opening remarks. Good afternoon, Honorable Chancellor, Professor Sunil Rai, UPES, Dehradun. Honorable Vice Chancellor, Professor Ranjit Singh, Shobhit University, Gango. My fellow colleagues, participants, delegates, and students. After 2 days of hectic schedule of academic journey, today we are on the end of the program, and that is the valedictory session. I welcome Professor Sunil Rai, who has consented our invitation, and he is here. Thank you, sir. Thanks for coming and gracing this occasion. In 2 days of conference, we have gone through different sessions, offline, online. Apart from the scientific sessions, we had the discussion on spirituality, about the Rudraksh, how Rudraksh is impacting in our health. It has been the feeling, it has been the experience that Rudraksh is somewhere influencing the karmas.
but how it is impacting, how it is doing, it was not known, it was not cracked, it was not, mechanism was not deciphered. I do remember 15 years back, Mahamandal Swarji and Professor D.V. Rai gave us, we were in the team, they gave us the blessed seed, and that was the Rudraksh seed. And they told that we all know that Rudraksh is very good for us. The saints are wearing in form of different ornaments. But still, there is no scientific evidence. Why not? We should do that. So then after, we decided that we should do some work on scientific work, and let us have the scientific evidences. That time it was very difficult. That time it was, sorry. That time people were not accepting that you are cracking, you are crushing the Rudraksha, and you are going to take the elemental analysis, biochemical analysis, physiological and physical analysis, electromagnetic analysis. It was, there was some religious sentiment attached with the Rudraksh seed. Against those religious sentiment, we've gone through the scientific validation. And today, we are with the significant result. With those results, we can convey, we can tell the society why you are feeling, your heartbeat is normal, your emotions are controlled, your karmas are controlled through physiological mechanism or biochemical mechanism. These have been done during these 15 years. So I thank my team for doing wonderful research in this area. And as you all know that this was the first international conference on Rudraksh in the world. So applause for the organizing team. Going in the same path where already the people have crossed is easy. Making the path, the new path, is difficult. So for this, I appreciate my team for making their effort. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, sir. Now I request Professor Manisha Rastogi, madam, to please come forward and present the report of the conference on Science of Rudraksha 2023. Thank you, Neha. And thank you, Professor Janand, sir, for giving such a nice remark to all the team and including us also, sir. I am honored to read the success report for International Conference on Science of Rudraksh, and it was a resounding success, bringing together some of the brightest minds from different backgrounds to explore the latest innovations and discuss the future of Rudraksh. The idea is already supported by multiple government and industry organizations like SERB, UPCST. We have got love and support from the industry sponsors like New Technologies, Stop Ad, Merona Scientific, Radius, Rudra Kailash, Ennoble IP, and so on. And I really thank all of them. This 2 day event featured a diverse array of speakers, panels, and interactive sessions that covered a wide range of topics from pharmaceutical, nanotechnological, spiritual, as well as overall holistic approaches related to Rudraksh.
The international conference provided valuable insights and networking opportunities, contributing towards the collective advancement for the scientific research on Rudraksh. The conference was graciously inaugurated by our chief guest, respected Rajendra Agarwalji, Member of Parliament, special guest Soham Guruji, Honorable Chancellor Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, Gango campus and Meerut campus. Day one of the conference had splendid 7 technical sessions with many brainstorming invited lectures and oral presentations. The day will have seen the keynote lecture from Professor Girish M. Joshi, ICT Mumbai, and from Dr. Anshuman Mishra, IAAM, Sweden. After keynote sessions, we have 75 papers that have been talked about on different aspects of Rudraksh. Apart from this, the highlight of the day one and even of day two was colorful and vibrant Rudraksh Mela, where different products of Rudraksh were available and have touched the heart of our audiences. At the venue of Rudraksh Mela, informative posters were also displayed by the poster presentees as a session, and the end of the day was through a cultural fest that showcases a wide array of cultural expressions and a loud music night. This was the end of the day and a very successful day. Day two was started by a rejuvenating and enlightening yoga sessions that has surely rejuvenated the body and mind of the participants. This was again followed by a splendid 8 technical sessions, both online and offline. And today, a total of 90 papers were discussed. The conference was also graced by international scientists from USA, Sweden, Turkey, South Africa, and Denmark. And it was concluded by the closing keynote lecture by Professor Praveen Bansal and Dr. Bindu Mangla, who emphasized the traditional knowledge on Rudraksh. And specifically, Professor Praveen Bansal says that how Ayurveda concepts have won Nobel Prizes year by year and just by validating the scientific information. Dr. Bindu Bagla talked about a role of women empowerment and how Rudraksha can be a tool for women empowerment. Their messages resonated with the attendees and underscored the commitment for advanced research on Rudraksh. The valedictory function is graciously presented by the Chancellor by the Chancellor, Professor Sunil Rao, University of Petroleum and Energy Studies. So to conclude, this conference represented a remarkable opportunity for us to learn from one another, collaborate, and work towards a brighter and more interconnected future. The success of this conference sets the stage for further advancements in Rudraksh research and its responsible integration into our ever-changing world. We look forward to the future initiatives, which promises to be even more exciting and impactful. Thank you. Thank you, ma'am. Now moving further, I request Professor Sunil Roy, sir, Chancellor, University of Petroleum and Energy Studies, to please come forward and give your blessing, sir. Very good evening. The Honorable Vice Chancellor of Shobhit University, Honorable Vice Chancellor of Shobhit University, Gango, the organizers of this wonderful event, faculty and researchers, scholars, dear students. It fills my heart with great sense of joy to be amongst all of you here today. My colleague also has stamped the day as a super day. And there is some private joke between us about the super part of it. But the super part of it here
is that this is one of the most unique event that I have witnessed in my life. And I've seen witnessed several conferences, events, but a conference such as this, which is on the science of Rudraksh, I don't recall that there is any other educational institution or scientific institution in the country which has organized such a event. So for that, my accolades to all of you. The very thought is great about Rudraksh. Every time, this is my third visit to the campus. One was a hurried one. The other two, I could spend some time. The last time when I was here before this, I had gone and seen the good work that is happening in your laboratories. A lot of things I learned about Rudraksh. And I was complaining to one of the exhibits which was there in the Pendal, that why most of these products are being created for ladies. Then he said, "Nahi sir, aapke liye bhi ek hai." So then and then there are multiple qualities of Rudraksh. One feels proud to be born in this great nation. I have good opportunity to serve at the Devabhoomi, the Uttarakhand, which has been the land of rishis, munis, the land of more than 300 varieties of medicinal herbs, and the kind of work that is happening at Haridwar, Rishikesh, and many other centers. That is leading the world about the real meaning of wellness. As my senior friend, the former chairman of NAC, always says, Dr. Bhushan Patwardhan, he says it is not health care, with no offense meant to any other kind of medicine regime, say allopathy, for example, right? With no offense meant to them, all of us consume that. But that's not health care, it's health scare. First, they will find out a disease, then they will find out a medicine for that disease, then they will scare the whole world. Now SARS will come, the world will end. The entire deaths that happened because of SARS were only 0.3%, which is far less than the deaths due to common cold. And yet the world pumped in billions and billions of dollars in trying to fight SARS. The ideologies such as this, which we are very fortunate, this is why I said that we are fortunate to be born in this great land. As our Prime Minister says that it is going to be the India, not going to be, we are already in that category of Vishwaguru, because it is not, the wellness means that you remain well, you don't fall ill. That is by good ahar, by good acharan, way of life, and of course by consuming the right kind of food and the medicines, which is the Ayurveda, which actually prepares your body to fight the diseases, because it's the body which fights the diseases. And as I was just turning the pages of the brochure, very nicely created document, my compliments to the organizing committee for creating this wonderful document. 133 research papers. ये कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड टाइप चीज होगी, आप चेक कर लीजिए. 133 research papers on Rudraksh. You know, I think I can stamp on it. You can please check back, Google it. There wouldn't have been any other conference which can boast of such big number. So wonderful. I think it's credit to all of you to have created this. And then I was also reading through some 14 are listed here. You know, the impact which is there about Rudraksh. So it's wonderful. It's wonderful, which is why I said this is a super day that I am here amongst all of you to attend this event. My many congratulations to all those who have presented the papers. My congratulations to all of you, those who have presented the exhibits. And my blessings and good wishes to all the young budding entrepreneurs who are going to take up this task of letting the world know about the brilliances of yoga,
brilliances of Ayurveda, and in particular about Rudraksh, which is the event of the day. The kind of work Shobhit University, Meerut, that I know of. Ranjit Saab has not yet invited me to Gango, so I don't know about the good work being done there. This is the way how you get self-invited for the next program, you know. Ek aur Dushala, ek aur Nariyal, and all those things can come to you. But no jokes, the way the things that I have seen last time in your various laboratories, the whole region looks up to you. This is the sugarcane capital of India. This is one of the very strong agri base, and this place needs your efforts, your faculty efforts, and more than the faculty, dear students. You can change the world. And my blessings and wishes to you for all that. Thank you very much for having me here. Jai Hind. Thank you, sir, for your motivated address. Now I request Professor Ranjit Singh, sir, respected Vice Chancellor, Shobhit University, Gango, to please come forward and address the gathering. थैंक यू वेरी मच नेहा. एक तो मेरे को प्रमोट कर दिया ये क्रम दे के, पहले मुख्य अतिथि जी ने बोल लिया, अब मैं बोलूँगा. सम्मानित मंच और मेरे सारे कलीग्स, सीनियर जूनियर और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे. कुछ सीनियर कलीग्स बहुत पीछे बैठे हैं, कारण नहीं मुझे पता. ये 2 दिन जो ये इस समापन समारोह पे हम आ गए हैं और जो 2 दिन बीते हैं, ये 2 दिनों में मैंने तो बहुत इंजॉय किया. और मुझे लगता है आप सबने भी, तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद और अब जहाँ जिस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, आपने बहुत इंजॉय किया होगा. बहुत कुछ अपने उद्बोधन में प्रोफेसर राय कह चुके हैं, साइंटिफिक बेसिस प्रोफेसर जैनन दे चुके हैं. मेरे पास आप सबको साधुवाद धन्यवाद देने के अलावा और कुछ नहीं है. पर ये बता दे रहा हूँ कि 2 दिन में जो इंटरेक्शन रही, जो नेटवर्किंग रही, और जो बात हम करते हैं, वो जो कथनी है वो करनी में कैसे बदली, कि मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक शोध की बात करते हैं या नेटवर्किंग की. तो ये 2 दिन में मैंने अलग अलग तरह के डिसिप्लिन के लोग, कंप्यूटर से शुरू करो, मैनेजमेंट, आप स्पिरिचुअल की आध्यात्मिक की तरफ जाएं, और उसके बाद जो डिस्कशंस हुए, और विशेषकर क्योंकि एक ही अद्भुत पौधे पे ये बात हुई, जैसा कि सब वक्ताओं ने कल भी और आज भी कहा कि ये अपने आप में एक अनूठी पहल है. और मुझे आशा है कि ये सिर्फ पहली नहीं, अब ये लगातार एक श्रृंखला रुद्राक्ष पे होती रहेगी. और जो अच्छा कार्य रुद्राक्ष की टीम यहाँ पे सेंटर जो हमारा काम कर रहा है वो जारी रखेगा, और ज़्यादा जानकारियाँ इस अद्भुत पौधे के बारे में जुटाएंगे, और कैसे ये सभी लोगों, आम जन को, उसके स्वास्थ्य को, जैसे सर ने हेल्थ केयर और हेल्थ केयर को अभी अभी बताया कि कैसे पैनिक क्रिएट करके जो है वो दवाइयाँ बेची जाती. मैं भी इसी का एक पार्ट हूँ, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज का हूँ. हमारा काम दवाई बनाना और बेचने का ही है, तो वो काम है मेरा. पर अगर सभी स्वस्थ रहें, दवाइयों की जरूरत ना पड़े, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. और उसमें जब जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमारी जो प्रणालियां हैं स्वास्थ्य से जुड़ी, आयुर्वेदा की बात, नेचुरोपैथी, योगा, वो बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया है. और मुझे लगता है आने वाले सालों में हम बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे. मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों और उन सभी लोगों, शोभित विश्वविद्यालय मेरठ, गंगोह, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस सम्मेलन की सफलता में अपना योगदान दिया है, चाहे वक्ता के रूप में, चाहे एक प्रतिभागी के रूप में, और यहाँ जो दर्शक बैठे हैं, ये बहुत बड़ा रोल है. उधर दर्शक नहीं होंगे तो हम इधर वाले क्या करेंगे. आप बहुत महत्वपूर्ण है. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये सम्मेलन, ऐसी गैदरिंग जो है वो फ्यूचर में होती रहेगी. जैसे माननीय कुलाधिपति महोदय ने कल हमें आदेश दिया है कि ऐसी ही कॉन्फ्रेंस या इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस गंगोह में करें, तो उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, और आप सबका सहयोग उसमें भी चाहिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भारत, जय हिंद. Thank you, sir. Now I request Professor Janan sir and Professor Ranjit Singh sir to please felicitate Professor Sunil Rai sir.
And with the different flavor. Thank you. Different kind of Now I request Professor Shiva Sharma ma'am to please come forward for vote of thanks. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity and promoting me. I'm not professor. I'm assistant professor in the Department of Biomedical Engineering. And actually, I have not written anything. So I don't have the formal vote of thanks, but I will try to convey my best. Divya Varsham Sahasram, Tu Chakshu Unmilitam Maya, Pashyan Mama Kulakshibhya, Patitaha Jal Bindavha Jata, Tat Rudraksh Rakshakaha. जहां जहां शिव के अश्रु गए वहीं पर रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न होता गया। सौभाग्य ये नेपाल को मिला, जावा को मिला, ऑस्ट्रेलिया को मिला, भारत के कुछ क्षेत्रों में मिला और हमें भी मिला। अब शोभित यूनिवर्सिटी में भी रुद्राक्ष का वृक्ष है और मैं इसका जो श्रेय देती हूँ वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर डीवी राय सर को और महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी को देती हूँ। उन्हीं की वजह से आज हमारे यहाँ रुद्राक्ष का सेंटर है और हम रुद्राक्ष पर काम कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम ये काम नहीं कर पाते। कहते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ती है और जुड़ते जुड़ते एक माला बनती है। तो हमारी जो माला है वहीं से शुरू हुई है और उस माला में जो बीज पिरोने का काम करा है वो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर ने करा है, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर ने करा है। उन्होंने हमारी हर स्टूपिड चीज को एक काम नाम दिया। उन्होंने हमारी हर स्टूपिडिटी को, हम बोलते गए सर हमें रुद्राक्ष चाहिए। हमारे पास पहले रुद्राक्ष के वृक्ष नहीं थे जो कि गंगों से हमें हमेशा मिलता रहा। आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज का आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि वो अपनी रिपोजिटरी से हमें रुद्राक्ष प्रोवाइड कराते रहे, उसके लिए आभार करती हूँ। और चांसलर सर ने हमेशा हर क्षण पे हमें सपोर्ट करा। जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट हुई उन्होंने यूनिवर्सिटी से हमें प्रोजेक्ट दिया। उस यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की वजह से हमारा काम शुरू हुआ। मैं धन्यवाद करूंगी ऑनरेबल वाइस चांसलर सर मेरठ एंड गंगो का। सर ने, दोनों ही लोगों ने हमें हमेशा टेक्निकल चीजों को, हमारी स्टूपिडिटी को साइंटिफिकली सपोर्ट करा। एक्चुअली हमें बताया कि हम कहाँ फॉल्टी हैं और कैसे चीजों को सुधार सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगी हमारी टीम का, उस माला के अगले कण का जिसमें लोग जुड़े, मेरी मनीषा मैम का जो हमेशा मेरा साथ दी है। जब मेरी पीएचडी थीसिस को इवैल्यूएटर रिजेक्ट करने वाले थे मेरी आरडीसी के टाइम पे, दे सेड कि दिस वर्क कैन नॉट बी पॉसिबल। उस टाइम पे डॉक्टर मनीषा रस्तोगी एंड डॉक्टर जयानंद सर मेरे साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा दिस विल बी डन। तो मैं यहाँ पे उसका क्रेडिट दोनों लोगों को देती हूँ और राय सर माध्यम बने इस थीसिस के लिए। मैं धन्यवाद करूंगी हमारे रजिस्ट्रार सर का जो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे हमें रुद्राक्ष में काम करने के लिए, हमें ट्रैवलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे, इधर उधर भागदौड़ करने के लिए हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे। रजिस्ट्रार और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का मैं धन्यवाद करूंगी। मैं एचआर कॉर्पोरेट रिलेशन डायरेक्टर हेड का धन्यवाद करूंगी देवेंद्र नारायण सर का, जिन्होंने हमें बहुत सारे रिलेशंस प्रोवाइड करे, कॉर्पोरेट रिलेशंस प्रोवाइड करे। मैं धन्यवाद करूंगी अपनी साइंटिफिक टीम का। मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े, अलग अलग डिसिप्लिन से लोग आए, जैसे सुधीश सर, ही वॉज द पर्सन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड द नैनो टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, उन्होंने मेरी बेवकूफी को एक साइंस का नाम दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। सुब्रतो दास सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मुझे उसको बायोलॉजिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसकी बायोमेडिकल एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करना है वो बताया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करूंगी। देयर आर मेनी पीपल्स जो मेरे साथ जुड़े। अल्पना जोशी मैम मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने उसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स एस्पेक्ट पे मुझे काम करना सिखाया। संदीप तेवतिया सर ने उसके प्लांट टिश्यू कल्चर पर काम करा। द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जिन्होंने
कुछ नहीं था, एक मल्टीमीटर लेके रुद्राक्ष को टेस्ट करना शुरू करा था और अनिकेत सर की लैब को पूरा ध्वस्त कर दिया था। तो मैं अनिकेत सर का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने सपोर्ट करा उस चीज के लिए। मैं धन्यवाद करूंगी जब हमने इस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला, हमने 7 लेक्चर सीरीज, देयर वाज नो वन विद अस कि हम कैसे 7 लेक्चर सीरीज करेंगे। ये भी एक स्टूपिडिटी थी जिसमें हम मनीषा मैम और मेरे दिमाग में जागा कि हमें कुछ करना चाहिए। देन वी स्टार्टेड विद द एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हमने लोगों को कनेक्ट करना शुरू करा। मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगी डॉक्टर विभोर भारद्वाज जी का, डॉक्टर निर्मल गौड़ जी का, जिन्होंने हमारा साथ दिया उसमें। मैं धन्यवाद करूंगी हमारी डायरेक्टर का, जो ना चाहते हुए भी जिनको हम घसीट लेते हैं हमेशा अपने काम में, डॉक्टर दिव्या प्रकाश मैम का। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया जब भी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ी, साइंटिफिकली सपोर्ट की जरूरत पड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियली। शी ऑलवेज सेड कि आप करो, मैं फंड रेज कराऊंगी। शी सपोर्टेड अस। कैसे लड़ती हैं सर से आई डोंट नो। मैं धन्यवाद करूंगी अपने डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स का, काशवी, तन्वी, नीति, किशले, फैज, मुझे जिसका नाम भूल जाऊं बता देना, उमंग, उमंग, सारे बच्चों का, गौरव, सिद्धार्थ एंड कौन बच्चा, स्वीटी, मानसी, सब बच्चे मेरे, सिद्धि, सब लोग। एक मैडम बेवकूफ हो जाती है तो बच्चे अपने आप हो जाते हैं। सो आई स्टार्टेड वर्क इन द लेबोरेटरी, बच्चे भी मेरे साथ लग जाते हैं, मैम हम भी करेंगे। एक्सट्रैक्ट निकालना है बच्चे काम करते हैं, सोप बनाना है बच्चे काम करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स के बिना तो डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं अपने सारे बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स का धन्यवाद करूंगी, उनके बिना रुद्राक्ष का रिसर्च अधूरा है। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को भूल जाऊं तो प्लीज मुझे याद दिला देना। मैं सारे डीन, डायरेक्टर्स का धन्यवाद करूंगी, जब भी उनसे किसी भी मदद के लिए जाती हूँ तो वो मना नहीं करते हैं, दे स्टैंड बाय टू मी एंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ तो सबसे पहला काम था कि कैसे वेबसाइट बने, तो मैं धन्यवाद करूंगी तहे दिल से डॉक्टर तरुण शर्मा सर का, जिन्होंने वेबसाइट को बना के इनिशिएट करा हमारी कॉन्फ्रेंस को, स्वीटी को ट्रेंड करा कैसे वेबसाइट डिजाइन करी जा सकती है। मैं धन्यवाद करूंगी राजकिशोर सर का, जिनकी वजह से पूरा हम आसानी से खाना खा पाए, हम रुद्राक्ष मेला को एंजॉय कर पाए। हमने सारा काम उनके ऊपर छोड़ा और उनकी बदौलत हम आराम से सेशंस को सुन पाए। राजकिशोर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी मास्टर ऑफ सेरेमनी फॉर वैलिडिक्ट्री एंड इनॉग्रल सेशन डॉक्टर नेहा वशिष्ठ का धन्यवाद करूंगी, जिनकी वजह से दोनों सेशंस हमारे बहुत इजीली कंडक्ट हुए और उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से करा। मेरा धन्यवाद है दीपिका मैम को, और कोई बच्चा दीपिका मैम के लिए, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। प्रियांक भारती को, जिसके बिना मीडिया का कवरेज नहीं हो सकता था, फॉर गिविंग मी द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड टू इंटरेक्ट विद द मीडिया पर्सन। थैंक यू प्रियांक, वेयर आर यू। मैं वानी को धन्यवाद करूंगी, जो इतनी सुंदर रंगोलियां आपको दिख रही है, ये वानी के बिना पॉसिबल नहीं थी। शी डिड अ लॉट इन दैट। मैं सोनम आर्या मैम का और ज्योति शर्मा मैम का धन्यवाद करूंगी, टू मोटिवेट द स्टूडेंट एंड अलाउ देम टू बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, हमारे यूजी स्टूडेंट्स के लिए। मैं धन्यवाद करूंगी जितने भी मैं एक स्पेशल थैंक्स जाता है प्रमोद गोयल सर को, जिन्होंने, मैं एक बार रेंडमली उनके पास गई, सर आई नीड द स्पॉन्सर्स, एंड विद अ क्विक शॉर्ट ऑफ टाइम्स ही arranged the sponsorship of 1 lakh for this conference. I will appreciate this thing. Thank you so much sir, thank you so much. And मैं फ्लो में इतना बह गई, आई फॉरगॉट टू थैंक यू सर, ऑनरेबल चांसलर सर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज। सॉरी sir, I forgot to thank you for being with us and giving us the time and giving the opportunity. Thank you so much sir. That's why I said कि I am not being formal. मैं धन्यवाद करूंगी सारे इनवाइटेड स्पीकर्स का, डेलीगेट्स का, जितने भी प्लेनरी टॉक्स हुए, इनवाइटेड टॉक्स हुए, स्पीकर्स आए, ओरल प्रेजेंटेशंस जितने भी हुए, एंड those gives me the wonderful opportunity to collaborate with them. Thank you so much giving me. There were the many people
others, those were from biomaterials, material science, those are from biochemistry background and the biomedical sciences. They asked me to be the part of their, or to be collab with them and get this work, to extend this work at different level. Thank you so much. Thank you so much for giving me the opportunity, and thank you. Yeah, actually, the online session can't be possible without Jayan Mahato sir. पूरा टाइम बंदा 9 से 5, 9 से 7 बैठ के ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करा है विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच. थैंक यू सो मच सर. आई फॉरगॉट वेयर आर यू, आई डोंट नो. थैंक यू so much sir. And Dharmesh, without Dharmesh nothing was possible. Actually all the creatives, sir, you appreciated this souvenir a lot, and this is designed by Dharmesh, and he is the mastermind. He designed all the brochures, invitation card, and this souvenir, everything that is done by the Dharmesh. And a special thanks again for Divya Prakash ma'am, Subruto Das sir, Sudish sir, Jayanand sir, and Manisha ma'am, Sandeep sir, to inviting wonderful people around the globes from India and abroad, and Tarun sir also. Thank you so much sir. Thank you. Thank you. अगर किसी को भूल गई हूँ तो माफ करना, but but you did a lot. Thank you so much. So after the बिना तैयार करे इन्होंने आप सोचिए तैयार करके भेजनी, आज का डिनर भी गया था. So on behalf of organizing committee, I would like to thank Dr. Shiva Sharma ma'am to make it possible all of us to be here and for the mega success of this event. After the overwhelming vote of thanks, I request everyone to please stand up for national anthem. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय. Thank you everyone. Thank you.